Who am I? Why I have come to the world? And what is the highest goal and purpose of my life? If you are able to give the answer of the three questions, then you can define, or you are able to define the word of self. And we're talking about the chapter self and personality. बुझेला सेकंड चैप्टर सेल्फ एंड पर्सनालिटी हम स्टार्ट करछे जेतबे हम सेल्फ ऊपर क्वेश्चन करबा तो हम माइंड रे तीनटा क्वेश्चन आसीबो हु एम आई व्हाई आई हैव कम टू द वर्ल्ड एंड व्हाट इज द हाईएस्ट गोल एंड पर्पस ऑफ माय लाइफ तो हमें तो फर्स्ट क्वेश्चन पचारियो हु एम आई देन सेठी हमें कोन करू हमें निजर नाटा कहितो by giving our name but by giving the name it is not describe yourself मु खाली मो नाटा कहि देले से मते डिफाइन करिवन मो नाटा मो परिचय दिए किंतु मो नाटा मोर आइडेंटिटी दबनी मु किए ताको से डिफाइन करिवन तापरे जेते बारे मु पचारिबी दैट हु एम आई एंड व्हाट इज सेल्फ देन आउट ए क्वेश्चन आसीबो व्हाई आई हैव कम टू द वर्ल्ड so we're not we're animal but we're the social animal we have the sense ame amar nijor bichar shakti अछि we have to differentiate ame कोटा भलो कोटा मंद सेटा ame कहि पारु बुझियो छिना तो मोर पर्पस ऑफ लाइफ मु केवल तो जन्म हेनी आज जन्म हेले काली मर जीवी तो किछि काम करिवि तो we have to coming to here to give something to the society as we're calling us that we are social animals हमको सोसाइटी सहित रहिबा को पड़ियो so why I have come to the world and what is the highest goal and purpose of my life मोर काम कोन and what is my goal actually means what is my dream is not like that for getting a car my dream is not like that for getting a 2 BHK 3 BHK house but मोर ड्रीम ता कोन रहिबो मो लाइफ तो ए तीनटा क्वेश्चन रो आंसर को जदि हमें डिस्क्राइब कर दवा और खाली आंसर न दे कि ताको जदि हमें एनालिसिस करिवा समीक्षा करिवा सेल्फ एनालिसिस आत्म समीक्षा जदि करिवा देन वी आर गेटिंग अ राइट आंसर दैट सेल्फ ओके सो फ्रॉम दिस concept we move to the forward that is what is goal of your life. The important goal of your life is to know the self, which means knowledge of self. Know the self or knowledge of self. Okay. That means when you talking about that who are you, then you can say about your characteristics. माने तम भीतर कोन स्ट्रेंथ अछि तमे ताको कहि परि तम पाखरे कोन वीकनेस अछि त सेटा भी तमे कहिबो दैट मींस तमे जदि निजो को चिनिछ तमरो स्ट्रेंथ आ वीकनेस तुमे कहि परि ओके तो आमे जो जर्नी बा जहां भी पाठ पढुचे तो वी हैव ए पर्टिकुलर एम दैट वी हैव टू रीच आवर डेस्टिनेशन तो आमे एई पाठ पढिले एई जगह रे पहुंचीबो मु आर्ट्स नै छी कि मु साइंस नै छी कि मु कॉमर्स नै छी तो दैट मींस वी हैव अ एम तो सेति पय मु एई कैटेगरी भीतर तीनटा स्ट्रीम भीतर गोटे स्ट्रीम चूज करिछि आ जो सब्जेक्ट चूज करिछि दैट मींस सम सब्जेक्ट इज इन माय चॉइस मे बी गोटे सब्जेक्ट एमती हेतै पारे लेकिन मो चॉइस ना नथिबो कॉलेज बाध्य रे दोसिरा नै बट ऑल द सब्जेक्ट दैट इज योर चॉइस ओके सो व्हिच मींस नो द सेल्फ व्हिच मींस नॉलेज ऑफ द सेल्फ जदि हमें निजु को निजे जाइने देन you cannot do anything you cannot perform anything हमें आगु को जाई परिबानी बा हमर मेरिट्स बा मोर मु चाली के हम को आजो तो चाली के एबे चल जो मालगोदाम थाना पाखरे जो अछि हम जोब्रा बैरेज पाखु चलो तो मु जानि छी मु जाई परिबी नाही खरार तो सेटा मु जानि छी किंतु हमें मु तो जानि छी तू कहि चलो ना मु जानि छी मु जाई परिबी that means I know that I am capable to go there or not. So we have the 2 legs, 2 hands, and as like we are calling as a human, but still there, आम पाखे सब जिनस समान अच्छी मे बी द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी आम पाखे अच्छी हेल्थ इश्यू भी अच्छी
So health issue टा समस्त पे समान होता है अलग अलग है कोई बुझे लगे नहीं तो से जिंस कौन करिवो हमको डिफरेंशिएट करे हमें समान हेले भी हमको डिफरेंशिएट करे मोर स्ट्रेंथ और वीकनेस टा कौन हो बुझे लगे नहीं so which means know the self which means knowledge of self the term self contains within itself and all characteristics of our existing including feeling emotion observation and experience तो आमे जदी कहिबा नो दी सेल्फ ता भीतर मु कोन देखिबे मोर फीलिंग्स कोन होछ ओके मते गोटे जिंस खराब लागे कि नै जदी आमे कोन करू आमे मजाक करू संग संग भीतर गोटे गोटे संग एक्सेप्ट करि नियन आ गोटे संग संग हटात को रिएक्ट करि न गोटे गोटे संग कोन थिबे सबले नॉर्मल हे थिबे किन हटात तमे से मजाक तंग सहित करिवो से हटात से सिचुएशन जदी नथिवो से रिएक्शन करि देबे तो that means that having the feelings आमे जदी कछि अलगा कथा कहबा ताको फीलिंग्स को कोन बाती नेक्स्ट होची इमोशंस and next होची ऑब्जर्वेशन every person wise observation is different समस्तंकर ऑब्जर्वेशन अलग अलग थाए गोटे जिंस को नै ओके जदी मो गोटे बुक ऊपर किछि जिंस कहिबी बा तम आगे किछि गोटे फ्रूट को नै कहिबी दैट यू हैव टू राइट समथिंग so you can write in your way and that sentence may not be same sentence का केवल same ही नहीं that means that is our perception about that particular thing okay so हमें जोटा देखुचे जोटा भाबुचे जोटा फीलिंग करूचे जदि हमें गोटे जगह गुपचुप खाउचे किबा चाट खाउचे so sometimes जण को से चाट टा भल लागियो जण को से गुपचुप टा भल लागियो तो मते चाट टा काहे भल लागे मते गुपचुप टा काहे भल लागे लालू काहे भल लागे पांचटा लोक कहउछन भल लागला दी जण कहउछन भल लागला that means the emotion is different and observation is also different okay we can experience ourselves in two different form in subjective form and in objective form short term you can define yourself in two words define yourself in two lines आगे subjective थियो तुम विषय किछि को तब तुम तुम स्टार्ट करिवो जे मु या थेले छोट बळ या करि गास्त्री बळ या so you define yourself in a subjective way when you have to define yourself गोटे गोटे लोकंको ना रे गोटे फिल्म बनी जाउची गोटे गोटे लोकंको ना रे गोटे बही भी बनी जाउची that means it is subjective हमको जदि पचारे who is Sachin Tendulkar is a great batsman but the great batsman or god of cricket it is a one sentence but how he became the god of cricket so that is defined in the subjective way but in objective way when anybody is asking who is Sachin Tendulkar तो हमें short form में जो आंसर दवा is the god of cricket तो हमें निजो को दीटा वे डिफाइन करि परिबा गोटे सब्जेक्टिव वे गोटे ऑब्जेक्टिव वे बुझे लगे नहीं then what actually the concept of self our observation or our own behavior can tell us many things about ourselves okay more observation on the particular topic mo gote topic upare kon bhabu okay so right now the recent thing is happened like some terrorists have come and they shoot the innocent people okay at Palgram so what is the perception of every person ki kochi je that you have to attack ki kochi you have to go for the diplomatic way okay ame रक्ताक्त way रे न जाय कि ame कूटनैतिक way रे घरे जेमि पानी बम करा आ जने को ना ये सब जिंस नै so you have to go front to front and you have to what fight them कि कोchi पाकिस्तान को पूरा उड़े okay so views are different समस्तंकर views सब अलग रही but what is the right thing like as a prime minister as a security in charge Ajit Doval so they have to think what is the right decision right now so when kon decision nele that smooth re sab kaam so as a we are not having the experience about the security we are not having the experience or knowledge about the foreign policies okay so depending on that way so they have to define okay one is our assessment of our own behavior sometimes we become the rude हमें बेले बेले कहू गोटे गोटे सांग ऊपर विरक्त हो जाओ तापर पछरे फील करो
no, in which way we are behaving to the friend, it is not good. So that means what? We are accessing ourselves. ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ସାଥେ ଆକ୍ସେସ କରିନେଲି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ଅଛି କି ମାନେ ଠିକ ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ତ କହୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ବିହେଭିୟର କରିବେ ନା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜ ବି ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର କନସେପ୍ଟଟା ପାଇବା our assessment on behavior increases our awareness about ourselves ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିପାରୁଛି then it gives you the valuable person or you have to awareness about yourself ତମକୁ କୋଉ ସମୟରେ କଣ କରିବାର ଅଛି ତମ ପାଖରେ awareness ରହିବ ଯଦି ତମେ ନିଜକୁ access କରିପାରିଛ આ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋର ଏକ୍ସାମ ଅଛି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ରେ କୋ ପେଜ ରେ ପଢିଲେ in between or before the exam I complete my courses and having a revision and I have confidence ତ ସେଇଟା ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ access କରିଛ ନିଜ ନିଜ assessment କରିଛ ବା exam ଦେଇଛ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ exam ପାଇଁ practice କଲି ତ ମୋର ଏତିକି ମାର୍କ ରହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଆଉ 2 months ରେ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତି because I am capable for that ତ ଏଇ ଯଦି ଜିନିଷଟା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ନିଜକୁ access କରିଛି ତାହେଲେ ମୋର awareness ଆସିବ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟାଇମିଂ ଅଛି ସେଟା କୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସେଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କଣ ଆସିବ ମୋ ନିଜ ପ୍ରତି awareness ଆସିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ The term self can be classified under the 3 categories: real or original self, possible self, or another is ideal self. Real and original self, possible self, and ideal self, and we go for it for further. What is about the real and original self? The real or original self, I mean, the real self refers to the actual, authenticate, and intrinsic part of the individual personality. जोटा कि मु निजे मोर पर्सनालिटी अलग अछि जे मु एई जिंस कहि परिबिनी तो तुम देखिबो किते तमर फ्रेंड सर्कल भीतर तमे कल बोलतिबो किछि किछि फ्रेंड अछने पढुचंदी दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग लाइक तका किछि एम नाही क्लास टू कॉलेज जाउ छु बस पत्राम करिया बस एंड ऑफ द डेज बट सम ऑफ यू आर द वेरी मच सीरियस अबाउट योर career that nahi mate class karibar ache mate result karibar ache parent are expecting something and I have to do the work to mu eteki barsa par kaam kare eteki degree karibi je mu life re kichi karibi so that means what that real self refers to the actual that what you are and you are the authenticate person and intrinsic part of individual personality like my personality is different than the others mu the chief ei paribi mu eti kotha koi paribi I have a own value more निजर गोटे value अछि तो कौन नहीं बड़े बड़े कौन हुए ना तमे देखि दियो कोनो से फिल्म स्टार को ऊपर एमती लगे देबे केस लागि जाय सी कौन करिवे ऑल्टर तको केस देबे कहबे मोर मानहानि मोकदमा जोरा कहले हां तो मोर जो एई ना रे मते उठेला मोर सम्मान खराब हला मते लोक खराब बोली कहउत तो I have to again you have to give the money for that it is called manahani mokodam that means every person having a value so when we are born in a society ame tare janma nauche khali we are not as an animal so every person has having a self respect samasta gote self respect hai okay and see self respect jodi ame na paiba then amu kon lage amu bhal lagine se jagare we have to quit that places okay money is not about anything mane सब लोक सब प्रकार काम करछंती बट कम पैसा रे जोटी रेस्पेक्ट मिलछि दैट इज यू हैविंग अ सेल्फ वैल्यू को जगह पैसा कम में किंतु सेल्फ वैल्यू अधिक है ओके गोटे गोटे थिबो तुम देखिबो ऑपरेटर सब थांती बड़ बड़ पत्थर सब उठांती तो दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी देन द आईएएस ऑफिसर बट द वैल्यू आर वैल्यू अधिक आईएएस ऑफिसर वैल्यू व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द मिनिस्टर्स ताका सैलरी कम काटर इंडस्ट्रियलिस्ट काटर but their value is greater than the industrialist se mane permission na dele industrialist eti business kar karibe nahi so that is all about your self se mane kam paisa pautandi se mane gariब भी हेई पारि थांदी se mane 5 वर्ष काम करथांदी किंतु ताकर वैल्यू बहुत अधिक आ से मने परमिशन न दले इंडस्ट्रियलिस्ट कोटे कोटे इंडस्ट्री को से बर्बाद कर देबे कोटे कोटे इंडस्ट्री को से मने सपोर्ट करिवेनी ताको भाई फाइन देबे so that is defined as a what personality and this real self encompassing their true qualities and aptitudes so it is define your qualities also nijor qualities
এটা ডিফাইন করিব সো কোয়া যায় যেতବେଳେ when teacher is talking about the student, they are asking what are the qualities are present in the student. कौन quality है? Quality is not like that only how you perform in the exam. कोई subject में कितने perform करती, that is not a quality. Quality means it is all about, means all round development. What is your handwriting? How you interact in the classes? वो class में कितने interact करती? केमती अलग behavior करते? How I am behaving to the other people? Okay, so it is all about depends upon your qualities, your aptitude, your inclination, and your characteristics. So all about thing it define your real and original self. Inclination means like right to decision. You can say like when to accept and when to reject. Okay. Inclination that. Authentic. Intrinsic part is what? It is a real part of our life. Authenticate means that I stick with my core values. मोर किसी values अछि मो ये value आगु को जाई परिबी नाही. That means what? मते जेंति as a student you are having authentic माने so I have to reach to the class on time and I have to get to your home on time. Okay, so that is my authentic. Nobody is saying to that तमे इस समय आसा समय जा. Okay, तमे late आसले भी केई कहबनी कॉलेज रे बा घर को late रे कले भी मे बी पेरेंट्स माने कहि परन यदि तमे घरे रहछो कि हॉस्टल रे तमे लेट कले से समय रे up to the last limit पर्यंत तमे न पहुंचछो ताले से जगह authority किछ कहबे. But I have the core value that I have to be fast and start my study. Okay, so when I in the hostel or when I in the room, nobody is saying that you have to read it. I know when to read. I know when I'm not read the my subject, then what is happened. And if I read well, then what I will pay. So that is your authentic value. Authenticity that you can. Please, you can say that you are not like casual or you are not like cheap, that you have to explore yourself to the others. Okay. Another thing, it cannot be affected by the external pressure. When you are the real and original self, it is not affecting by the external pressure. माने मते अधिक प्रेशर पकेले भी मोर निजत्व को केही अलगा करि परिबे नाही बा बदलै परिबे नाही. What I am, that I am. Okay, तो कोन से प्रेशर रे बा किए मते कहिले जे मु आ बळी हेइ जिवि हबनी. So we have in our life we have an ideal person. समस्तक लाइफ रे गोटे आइडियल पर्सन को I want to be like that. So I want to be like Sachin Tendulkar. I want to be like the APJ Abdul Kalam. But you can't like to be that person. You have to follow the rules only. You are unique. Mu unique. A mo bhali kehi hebenni. Okay. Mu rules follow karibi. Se jo bhalo rules kahichhanti taku follow karibi. But mu hoji mu alaga. So I am not as compared to the Sachin Tendulkar. I am not compared to the APJ Abdul Kalam or Vivekananda. Okay, but I follow the core values, what they are saying. I follow their path, but I have to create all my path. ମୁଁ ତାଙ୍କ values को नेबी, but I have to create my own path over it. Okay. हमारा गोटे माइंड सेटअप है. Okay, in future I have got this position, or in future like my parents are not living well, they have they're living in a rented house. Okay, they're having a difficulty in their life, that they're not having bikes. Okay, they're not having good home. तो मु एमती भलो चाकरी करिवि पर एमती भलो जगह रे पहुंचीबे that I have to give all the things. जोटा के पेरेंट भी मो प्रति गर्व अनुभव करिवे and मु जो दुख कष्ट रे छोट बड़ पड़िछि आउ से दिन मु पार कर. So that is called as the word. That is refers to an individual mental representation of who they might become in the future, including their hopes, fears for their future self. Hope भी रहियो दरकार आ गोटे जिंस रे fear भी रहियो दरकार. Fear अर्थ होचे जदि ड्रीम 11 में 49 रुपीस लगे. हां के तर लगे जो. ओके, तो 49 लगे हम गां प्लेटा पाइते 3 कोटी मु लगे दे. हां तो 3-4 थर पके दबे तो पहिला पैसा तो पॉकेट मनी पैसा भाई आउ पकेबी.
pocket money jeti ghare dechi na to miliboni. Okay, so that means you are having a fear also. That is a possible sale. Okay, fear means go for the crime. Mu ako murder kariki paisa nebi, mu chori kariki paisa nebi. Okay, mu lancho leki paisa nebi. So when I go for this, when I taking the bribe, when I go for the murder, that means I have to punish. The punishment मिलिबो. The same डर भी रहेगा दरकार. So we have to have a core value. Their cognitive construct does shape an individual sense of self and can motivate their behaviors. So এই जो जिनस जो रहिले, it create and construct yourself. जे तो निजु को construct करियो. Construct केमती बनेबो for your future, and you become as a good person. Now you are studying. When after your studies is over, you recognize as your personality. ए लोकटी भलो, आंको behavior टा भलो. तुम्हें बहुत लोगों को साथ जड़ित होगा because of your voice, because of your behavior. मुझे rude behavior करिवे, मो से तो कहीं जोड़ी है बेनी, मते कहीं भल पाइबे नी, अब society ने मते accept करिवे. So when you are not having any social value, that means you are not able to earn anything. और तमर जदि social value रहिबो, you have to up to reach. तमे अधिक reach हे परिबो. Reach in the sense is not like that you are getting a lot of money. Reach in the sense that when you are in a difficult period, every person is there to help you. Okay, जदि मु कोन असुविधा पड़ी जाय छै कि मु चाली के आसुची मो पाखे गाड़ी पंक्चर हे छै पांचटा लोक मते ठिया हेबे मोर जदि एक्सीडेंट हे जाय छै अधिक पैसा दरकार पड़छ पांचटा लोक मते ठिया हे पैसा देबे मो पाखे पैसा नै किंतु से माने मते क्योर करि के आनिबे. That is the core value. I have nothing, I have no money, but people are there. Okay, so I want to be मु एडा सब मु शेयरिंग कर दे मुझे व्यस्त होगा था माको शेयर करिवि क्वेश्चन आंसर भी शेयर करि तेनु किसी एकदम खाली बुझो आ जो वर्ड जदी किसी कष्ट लागुची आको पॉइंट आउट करो मते को हला मु टोटली जिंस शेयर करि देखा मु एबे आदर प्रोजेक्शन में देला तो विजुअलाइजेशन भी होगा हां कहू छी एटा जाय बुझे मैं पूरा शेयरिंग करबी तुमको नोट भी डाकी जेंति नोट पठैतली क्वेश्चन आंसर वे सेंति भी नोट भी पठै. Ideal self version of yourself you aspire to be encompassing qualities and belief. Encompassing means that I have to acquire the quality. माने मोर जो क्वालिटी अछि से क्वालिटी के को मु गेन करबी ता से तो कोन करबी बिलीव रखिबी and characteristics you desire to possess or embody. माने मु जहा चिंता करछे इन फ्यूचर रे मु हेबे ता पई मते कोन करिया पड़िबो ना एबे टू प्रिपरेशन करिया पड़िबो. What kind of preparation you can do? You have to develop your qualities. Quality in the sense it is in the sector of education. पाठ पढ़ा रे भी मोर क्वालिटी बढ़ेबार अछि and behavior, talking to the others and people are accepting me. मो कथा वार्ता रे मते केते भल पाउछन्ते मते केते एक्सेप्ट करछन्ते आ जदी मो मोर एब्सेंस रे से केते मते मिस करू. So that define your qualities. Not quality doesn't mean actually भलो है मैं आज आसिनी एबिलिटी सबले आज गड़बड़ होची. So that means what we are rejecting. Qualities means if that person, that student is not present, we are missing and we are asking why the student is not present. Okay, so qualities and the beliefs like you can say what you commit you are bound to give. So commitment means that you have to complete that must be your core values. Core values अर्थ होचे गोटे कंपनी रो भी core value थाए निजर core value थाए निजर core value केते बळे आसे मु जदि कमिट करिछि का को जिंस देबे तो भाई मते 10 टका टा धार देई था मु तते काली डेफिनेटली फेरई तो काली फेरई माने काली जो टाइम देती ता पूर्व जदि फेरई दोछि देन आई कीप माय वर्ड्स. आ जे 10 टका देके 5 दिन जे देखा देबेनी अरे सांग तो कुआडे गलो 10 टका नै कि मते देलनु. So that means what? I'm not having any core values. Core values is what? Like if employees are working in a company, okay, but they're not giving their salary. They be working on salary level. So it is not a core value of a company. The company good one. Okay, so anything is happened. If the company is with the employee, then
when the company is in the place of down, the employees are with the company. Okay, so eta ko kuha je core value mu kete develop korchi mu niji. Okay, so and the characteristics you desire to possess or embody is a vision of who you want to become. So it must be your vision. Ideal self means it is your vision that I want to be this one. I will be a doctor, I will be engineer, I will be IAS officer, I will be a minister. So these are the things that you have to become. It define the ideal self. It's a vision of who you want to become based upon your aspiration, values, and experience. In essence, it's the best possible you in the future. Okay, so best ନିଜର best ହବାକୁ ହେଲେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନିଜର aspiration ରଖିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କଣ ହେବି ଆଉ ତା ପାଇଁ କଣ characteristics ଦରକାର ମତେ କଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଦରକାର ତାକୁ ବି ରଖିବେ ନିଜର core value ରଖିବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଇବେ ନହେଲେ ଖାଲି ଯାଇକି ଶୋଇସିରେ ଶୋଇ ପଡିଲେ ଘରେ so I am not going to the ideal person. Okay, based upon this the word self is having a different category. तो सेल्फ को जदि हमें विचार को नबा तो सेल्फ खाली आइडियल सेल्फ आ भीतर रही नहीं तो सेल्फ को आउ डिफरेंट कैटेगरी रे सब डिवाइड करा जाय छी ता भीतर हमें देखिबा व्हाट इज दैट सेल्फ आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी refers to the individual understanding of who they are encompassing their self concept role and how they see themselves in the world. Self identity, my identity is I am a teacher, your identity now you're a student, but when after 6 years you become a officer, you become a employees of a company, that is your identity. Identity means your roles. Okay, more role epe kono I am a student, I go my work is for study, mate proper study karibar achi, so ठीक समय रे उठिबार अछि ठीक समय रे पाठ पढिबार अछि, so that's my identity now. Okay, एबे जदि तुमको पचारिए तुम्हारा identity, so I am a student. Okay, so who they are encompassing their concept and roles, how they see themselves in the world. So how you see in the world. आमे जेतबे पाठ पढु आमे कहू ना हम क्लास ना ए पिलाटा बहुत भलो पिलाटा ना ताको पारी होबो. Okay, so that means what? You are evaluating that I am not to go to that particular place, but you are not trying. Okay, तो ए समय सेल्फ आइडेंटिटी हमें निजे निजे क्रिएट कर देते हो जे मु पारिबी बट आई कैन. ओके, हमें निजे निजे कम कर इवैल्यूएट कर देते हो बिकॉज़ वी आर नॉट गो फॉर आवर ओन परसेप्शन. मु सेते के लेबर करनी सेते पे मु आपको निजे को निजे से जगह रे ठिया करी करू. ओके, इट्स ए कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग सेंस of self that's shaped by the internal factor like thoughts, beliefs, and external factor like social interaction and relations. This identity is a complex evolving sense of self by the internal factors. निजर internal factor निजर identity create करे. Internal factor means my behavior, it create the identity. ना ये pillar of behavior टा वाला, ये pillar of interaction टा वाला, so that create the identity. And what is my thoughts to about the others? मु कहा प्रति कौन चिंता करू. So when you are thinking in that way, you are acting. तुम्हें जहाँ चिंता करू छो, so everything is reflected on your face. हमें को हमें जो चिंता करू छो हमें लुचेई दवा. You cannot hide anything because it is reflected on your face. तुम face ही सब कुछ कही दो. यदि मु घर माड़ गाली सुनिछि कि गाली सुनिछि मो मोटा सेवा रहइबो. मजे यदि खुशी अछि मो मोटा हसबार. दुख रे अछि को चिंता करूछि then face is the reaction. The face value face reading रो सब जिंस आखा भाई जाना दे. Okay, so that means it's a complex and evolving sense of self that's shaped by the internal factor like thoughts, like beliefs, and the external factor like the social interaction. Social interaction ऊपर भी हमारा identity define करे. मो सोसाइटी रे जेमती रहउची से सोसाइटी रे मते लोक केमिति चिनुचंती, से सोसाइटी रे लोक मते केमिति एक्सेप्ट करूचंती. That also define your self identity. बुझिला. Self concept is a person beliefs and perception about themselves
encompassing their thoughts, feeling, and evaluations. Okay, self concept is a person beliefs and perception about themselves. जे मु आगो को कौन हेबी आ मु एया ही हेबी जोटा कि मोर स्ट्रांग बिलीवनेस है मु ए जिंसटा हेबी आ अबाउट देमसेल्फ एनकम्पासिंग देयर थॉट्स फीलिंग्स एंड इवैल्यूएशन सेमान थॉट्स ताकू निये ताका फीलिंग्स निये आ सेमान इवैल्यूएशन प्रोसेस से जगह बोली दैट इज कॉल्ड द सेल्फ कांसेप्ट. It's the answer to the question, who am I? So actually the self-concept is giving an answer. Then who am I? It includes belief about personal characteristics, ability, social role. Okay, अभी तक कौन रही personal characteristics. मो भीतर कौन character सब अच्छी. मोर ability कौन अच्छी. What kind of thing I have to do. मु कौन work करी पारिबी. And the social roles. कौन roles मोर कौन roles अच्छी. ये सब define करे self-concept. Self-concept is influenced by the personal experience, psychological traits, and feedback from others. Okay, so it depends upon the experience. मु ए जो second year है ला मु केमती पढ़ी. So you are having an experience. How you get the experience? You are having the experience on the schooling, school board exam तो देख. ना सेठी एति के पाटा देला. एठी आउ 3-4टा बही फॉलो करिया पड़ती देन जदि मो सेठी 2 मास पूर्व स्टार्ट करिछि आई हैव टू मस्ट बी स्टार्ट विथ द 6 मंथ और 7 और आई हैव टू व्हाट स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग ताले मते प्रेशर आसी गले सेतबे घरे रहउतली मा प्रेशर करथले के नाही सकाळ उठो रात्रि डेरी जाय पड़ तो मु एबेटू जदि ताको सिंक्रोनाइज करके पढ़िबी सब दिन 4-5 घंटा लेखा पढ़िबी ताले मते लास्ट को आ परिश्रम करियो पड़िबो. So that is an experience, psychological traits गोटे concept अच्छे आगु just पढ़िबा and feedback from others. ते मो विषय रे अन्य लोक माने कोन कहउत. So that is a feedback. Okay, so it defines your self concept. देखो सेल्फ एस्टीम एटा बुझछ कि भाई सेल्फ एस्टीम टा कोन को self adjustment in every situation, see the right future. Okay, आगे कोई करियो self esteem. Esteem means what? Now it is a increase your confidence and motivation. माने मोर जो confidence अछि motivation अछि and I have to adjust in any situation. यदि हठात कोन आसीबो एबे एसी चली छी लाइन पड़ेला. ओके लाइन पड़ेला एबे तमे क्लास से कंसंट्रेट करू छ एन्जॉय करू छ एबे तो हठात लाइन पड़ेबो दैट मींस हठात तमे कोन करू ना गरम सुई नि सांग कथा सुनी नि that means you know that after the 10 minutes or 15 minutes the class will going to be over then move etik jodi adjustment kar dote then I am getting a good lecture so lecture will be complete so that means you have to adjust and cooperate to the others तो मु केते दूर एडजस्ट करि परिबी यदि मु एठी एडजस्टमेंट करि पाती then when the future if anything situation has come then I have to what adjust myself तुमे किछि जन हॉस्टल रे रहउछ जेता हॉस्टल रे रहउछ घरे तमरो ड्रेस पत्र घरे बाबा मां सफा कर दोथले आयरन कर दोथले बट नाउ व्हाट हैपेंड यू कैन डू योरसेल्फ खाई निजे धोए पड़तो खाइबा मां को मागिले सांग सांग बाडी दोथले एठी खाइबा पय वेट करिया पड़ो so that means what it is a situation that it enhancing your bright future that means तमे जते बळे आगु को जीवो when you are joining in a defense तो सेठी 50 टे पिला नथिबे 100 टे पिला नथिबे it is having a full battalion गोटे बड़ा बड़ा battalion थियो सेठी वेट करके आइतो तुम खाइबा को मिले then when your time has come then you are standing in a queue then you are getting your meal
तो सेठी दी चारटा पिला नथिबे तुमको सेठी एडजस्टमेंट करे पड़ो ओके एंड यू आर हरी टू गो एनीवेयर बट यू हैविंग योर ओन कार तुम कार खराब है जायछि बाइक खराब है जायछि देन यू हैव टू alternate solution is that you have to go by a bus तो मो बस रे जाउछि सेठी गोटे भीड़ रहउछि आई स्टैंड ओवर देयर आ 10टा बेले बहुत भीड़ थाए समस्त ऑफिस को जानते तो सेठी आ तुम जाई परिबनी मो ओला बुकिंग करी बट यू आर नॉट हैविंग एनी मनी ओके आ तो तोरा स्ट्राइक हेछि केवल गवर्नमेंट बस चलियो प्राइवेट बस किछि चलो so that means if you are not adjusting then you pay for it so adjusting means जेतबे थोड़ा एबे फैन चालुची एसी चालीची थोड़ा बात्या आला एबे फनी गोटे हेतला मझे खरा दिने हां पानी मिललानी फैन चललानी मोबाइल चार्ज हेलानी that means situation is very but drastical okay गोटे दिन पूरा ठंडा लागला दी दिन ठंडा लागला तापर गरम 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 पड़े तो जदि हमें से सिचुएशन को एडजस्ट न करि परतांते देन यू कैन नॉट सर्वाइव सिचुएशन को जदि हमें एडजस्टमेंट करिवा वेदर को जदि हमें एडजस्टमेंट करिवा देन इट इज अक्वेंटेड विथ योर बॉडी देन हमें एते शीघ्र टायर्ड होबानी आ एते शीघ्र हारि जिवो ओके so it is a individual overall evaluation of their own worth value encompassing both their beliefs about themselves and their emotional response and the belief तमर इमोशनल रेस्पॉन्स केमती हबो ता प्रति तमरा बिलीफ सिस्टम केमती काम करिवो से डिफाइन करिवो सेल्फ एस्टीम इट इज एसेंशियल हाउ मच यू लाइक एंड वैल्यू योरसेल्फ तो निज को तुम्हें केते वैल्यू दउछ सेल्फ एस्टीम दैट मींस यू हैव टू फोकस योरसेल्फ तमरा निजर वैल्यू हाउ यू हैव टू मेक योर वैल्यू को जिंस को नै कि तमे निजर वैल्यू बने महात्मा गांधी जतबे रहिथिले तो सेतबे तो से फॉरेन ने जाके तंग वकीलती करथिले तो से गोटे भलो जॉब करि परतांते एंड गेटिंग ए गुड सैलरी तो से काहे के आसे के इंडिया इंडिपेंडेंस में से लागे एंड से सेते के लागिले बोली आज सब टंका दे दे सकाळ उठे ताको देखो से रात रे सोया बोल बुढ़ा से प्रेजेंट सो दैट मींस व्हाट से निज को एते वैल्यूएबल बनेले दैट मींस टिल नाउ or like till India is present or till world is present so father of the nation of India